ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। राजा उल्का मुख, साधु बनिया बड़ी एवं लीलावती कलावती जी की कथा। ओम विष्णवे नमः। श्रुत उवाच पुनरग्रेपवक्ष्यामि स्त्रुद्धं मुनिसत्तमा पुरा चोलकाबुको नाम नृपश्चासीन महामते जितेन्द्रिय सत्यवादी जयो देवालयं प्रते दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयस्सुधे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन् तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहु धनेरनेकैः परिपूरितः। दावं संस्थाप्य तत्तीरे जगामनृपतिं प्रते दृष्ट्वा स व्रतिनं भूपं पप्रच्छ विधियान्वितः। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोर्तुलतेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाम्यया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधो प्रोवाच सादरं सर्वं कथय राजन् करिष्येऽहं तवोदितं। ममापि सन्ततिर्नास्ति ये तस्माज्जायते ध्रुवं ततो निवृत्तवाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु स सत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानन्दचित्ता अभवत् धर्मपरायणा। गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। दशमे माति वै तस्याः कन्या रत्नमजायते। दिने दिने सा ववृद्धे शुक्लपक्षे यथा ससे नाम्ना कलावती चेति तन्नाम करणं कृतम्। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं। साधुर्वाच विवाहसमये तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये। इत भार्यां समाश्वास्य जगाव नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृद्धे पितृवीश्वरी दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर् नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं दूतं प्रेषयामास धर्मवितः। विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचार्य तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ। तस्मादेकं बडिपुत्रं समादाय गतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं बडिपुत्रं गुणान्वितं ज्ञातभिर्बन्धुभिः सार्धं परतुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानतः। ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टो भवत्प्रभो। ततः कालेन नीतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं क्षमात्रे सहितो वणिक् रत्नसार पुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यं करो साधुर् जामात्रा श्रीमता सह। तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभो भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान्।
दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरो वणिजौ यत्र संस्थितौ। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूता समायाता जस्त्रास्त्रे सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा धनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ हर्षेण धावमानाश्च प्रोचुर्निसमीपतः। तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो राज्ञा ज्ञप्तास्थितः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तुतावुभौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः माया सत्यदेवस्य न सतङ्कस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना। तच्छापाचतयोर्गेः भार्या चैवाति दुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहीयच्च स्थितं धनम् आदिव्याधिसमायुक्ता क्षुत्पिपासाति दुःखिता अन्नचिन्ता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे। कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम्। एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्चाद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति। माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह बातरं प्रति सत्वरं द्विजालये वृतं बातर दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदं। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता चावदातु वणिग्भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह। भर्तृजा मातरु क्षिप्र मा गच्छेतां स्ववाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुर्जामातुः चन्तुबर्हसि। व्रतेदानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं। बन्दिनो मोचे प्रातर्वर्णिजो नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुरा नो चेत् तामनाशयिष्यामि स्वराज्य धनपुत्रकं। यो मा भास्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभो। ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह उपवित्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति। बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयितौ वणिक्सुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा भोजयित्वा महाजनौ समानीय निपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विता। आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात्। ततो महाजनौ दत्त्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् अस्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं द्वौ चतुर्भयभिः बलौ। राजा वणिक्सुतौ वीक्ष त्वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति वै भयं। तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माधिकारयत् वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्च्युतौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा तोषयद्वृषं पुराणीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान्। प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं। राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः इत्युक्ता तौ महावैश्यौ जगमतो स्वगृहं प्रति। श्री स्कंदपुराणे अन्ये देवरेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्यायः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।